बड़ी खबर यह कि अरब में ईरान का नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है। खाड़ी देशों में वाटर प्लांट टारगेट किए जाएंगे। नए ऑपरेशन की तैयारी में अरब में ईरान। फुजिराहा हमले के बाद यूएई में पानी का संकट, तेल की जगह पानी पर टारगेट करने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो एक तरीके से ईरान का ये वाटर लॉकडाउन है और अरब क्या प्यास से घुट जाएगा। जी हां, खाड़ी में ईरान का अगला टारगेट क्या है? खाड़ी में ईरान का अगला टारगेट अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो अरब के ऊपर दबाव बनाना है। और फुजरा में ड्रोन से हमला किया गया, 2 डिसैलिनेशन प्लांट इससे प्रभावित हुए। सीधा असर वाटर सप्लाई पर। यूएई में पानी की भारी किल्लत है, वहां पर 40% लगभग दाम बढ़ चुके हैं। पानी पर सीधा असर पड़ा है। यूएई के बड़े होटल्स में स्थिति की बात करें, पानी का इस्तेमाल यहां पर लिमिटेड कर दिया गया है। पानी के प्रयोग पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया गया। 48 घंटे के भीतर पानी का उत्पादन अगर बात करें तो 30% तक ये गिर गया है। जितना सप्लाई है उससे 30% नीचे आ गया है। हॉर्मुज ब्लॉकेड पर रणनीति बदल ली है। अब पानी ब्लॉकेड, वाटर ब्लॉकेड ईरान कर रहा है, जिससे अरब देशों पर दबाव बढ़ जाए। और वही अरब पर ईरान के प्लान का भी पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि अरब के डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट किए जाएंगे। खाड़ी को पानी के लिए तरसाने की योजना तैयार की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से संकट और गंभीर हुआ है। प्लांट के लिए जरूरी सामान लाने में दिक्कत होगी। तो अरब के डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट किए जाएंगे। इससे आम जनता को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीजों पर अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान की तरफ से रणनीति तैयार हो रही है। तो देखिए, अरब देशों के पास तेल का तो भंडार है, लेकिन असली जरूरत पानी और जो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, जो पोर्टेबल वाटर है, उसकी एक बड़ी समस्या। और ऐसे में डिसैलिनेशन प्लांट जो है उसका बड़ा सोर्स है। अरब को क्या प्यासा मारने की तैयारी है ईरान की? इसकी योजनाओं पर गौर करें तो योजना नंबर 1, तेल के बजाय अब पानी के स्रोतों पर सीधा निशान, यानी पहले बिजनेस को टारगेट, अब देखिए बेसिक जरूरतों को टारगेट। योजना नंबर 2 की बात करें तो लगातार हमला करके डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर लाइनों पर हमले होंगे और इससे जो पानी सप्लाई है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगा, और वो हो भी रहा है। इसके अलावा कई और योजनाएं तैयार की गई हैं। हॉर्मुज में कैसे केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोकना, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है और रणनीति तैयार हो रही है, जिससे कि मीठा पानी ना मिल पाए और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर टारगेट किया जाए, जिससे कि लोगों को पानी की परेशानी होने लगे। जंगी टेंशन के बीच चीन में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। एक और बड़ी खबर, बढ़ते हैं आगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन दौरे पर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात उन्होंने की। दोनों देशों में हो सकता है अहम समझौता हो। जंग में सामरिक मदद पर हो सकती है सहमति। आपको बता दें, विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात कर चुके हैं, उनको जानकारी दे चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान और रूस के दौरे पर भी वो जा चुके हैं, ओमान का दौरा भी कर चुके हैं, और अब चीन का दौरा वो भी तब जब कहा जा रहा है कि चीन और रूस की तरफ से ईरान को मदद की जा रही थी युद्ध के दौरान। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दौरा महत्वपूर्ण है। वांग यी से उनकी मुलाकात होती है, कई अहम समझौते हो सकते हैं। तो टेंशन में डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं अब्बास अरागची। आपको बता दें, जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के दौरे पर होंगे। दौरे का मकसद क्या है? रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना भी एक मकसद है। व्यापार बढ़ाने पर दोनों देशों में चर्चा की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। इस दौरान मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन चीन क्या मदद दे रहा है, ये भी जान लेते हैं। ईरान को कैसे मदद मिल रही है? हथियार, इंटेलिजेंस, रसद, तेल व्यापार में मदद हो रही है। और बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात ये कि अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान को आर्थिक मदद बढ़ा सकता है चीन। इस दौरे के बाद और भी मदद हो सकती है। और TV9 भारतवर्ष की टीम ईरान के वॉर जोन में मौजूद है, जहां संवाददाता सुमेरा खान ने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस्माइल बकाई ने इस इंटरव्यू में कई विस्फोटक बयान भी दिए हैं।
और बयान में क्या कहा है? परमाणु मुद्दे पर बकाई ने साफ कहा कि ईरानी परमाणु बम किसी देश पर दबाव बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से कोई उसे रोक नहीं सकता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐलान किया कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी हमले और दबाव के आगे ईरान नहीं झुकेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बड़ा बयान सामने आया। खाड़ी देशों पर हमला रक्षात्मक कार्रवाई है, यह कहा गया। ईरान अमेरिका के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस आर्मी की मौजूदगी बोझ, राष्ट्रीय हित के लिए हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी। TV9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त इस्माइल बकाई साहब मौजूद हैं, जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उनसे हम सभी अहम मुद्दों पर बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू इस्माइल बकाई साहब ऑन TV9 भारतवर्ष। The first and the most important question that everybody wants to know right now is that what is the status of the deal or the points that you had proposed to America, and is there a communication line that's open between Iran and America at this moment? Thank you. Yes, the negotiations are ongoing with the mediation of Pakistan. The communications are being done through the mediator. We have received their response to our proposal. Right now, it's on the review, and we should respond to that as soon as our studying of their paper is finalized. But we keep hearing from Mr. Trump that he's rejecting this, he's rejecting that, and not accepting this and not accepting that. So is there still room or scope for negotiations or communication, or would that only be by force of strength that the deadlock is finished? Yes, you can see so many contradictory remarks on the part of the United States authorities, and that's basically one of the obstacles to any meaningful diplomacy between Iran and the United States. But still, we have shown our seriousness, our good faith in diplomacy. We are going to be focused on our national interest. And we are not going to be diverted or distracted by different noises that we are receiving from different authorities in Washington. So as far as Iran is concerned, Iranians have shown that they are serious. They are as serious in diplomacy as they are in fighting their homeland against aggression. There is this narrative also that is being talked about, and especially from the American side, that there is increasing division within the Iranian state, IRGC and the government, or different factions have different opinions. Is that true, or is there any grounds for that? Let them have their narratives, okay? Let them be happy with these false narratives. We are not going to be, as I said, to be distracted by these false narratives. We have shown that Iran is a united, determined state, and is going to keep its resilience in the face of their aggression and their maximalist approach regarding diplomacy. So we are going to keep focus on our priorities and our national interest. During the war and also now, out of all the Arab countries, UAE was the most targeted country. What is the reason behind that? Is there any specific reason why, apart from all the other targets, UAE especially was highly targeted? Iran's response to attacks by the United States and Israel was in exercise of our inherent right of self-defense. And under international law, any country that allows its territory or its assets or its installations be used
by the aggressors to attack another country is regarded as complicit. So what we did in reaction to American-Israeli attacks against Iran was in exercise of self-defense, and we have made it clear that we have no enmity or animosity with any country of the region. What we did was exactly defending Iran's territory and sovereignty against these attacks, and we are very sad that the territories of the countries of the Persian Gulf, some of them, were used by the United States to wage a war of aggression against Iran. Would you see the relations changing after the war between Iran and the neighboring countries? I think we have to work together to build confidence among ourselves, because we are sure as Iran that the security and well-being of the region depends on all countries working together. This was a very bad experience for every country in the region, and I think this experience showed to everyone that the American military presence in the region will not bring security for the people. It is only a liability. Strait of Hormuz is the biggest concern of everybody, and everybody wants to know that what would happen eventually at Strait of Hormuz. But there is also right of navigation. There is this argument that if this was to happen, then Strait of Malacca or Strait of Gibraltar, there also the other countries would start accepting or asking for these kind of tolls. So how justified is Iran in doing this, and would this continue forever? I think the word toll is not the appropriate term to use in this case. What Iran, as a coastal state of the Strait of Hormuz, did was in exercise of its right under international law to protect its national security and national interests against American-Israeli aggression. What we have been trying to do is to devise a mechanism, a protocol, with the cooperation of Oman as another coastal state, to ensure the safe passage of ships through the Strait of Hormuz, while at the same time assuring the national security of Iran. The question about nuclear enrichment, Iran has said that that's a red line and Iran would not negotiate on that issue. And it is for Iran to decide how much nuclear enrichment they want to do. On the other side, Iran keeps saying that they would never want a bomb, and that's their policy, that's their stated policy. Yet the enrichment levels keep increasing. So is that a leverage also for negotiations? What keeps increasing? The nuclear enrichment levels, or the level at which... Is there any nuclear enrichment right now? No, I'm just asking that. Do you think that that would be also an important leverage for negotiations? It's not a matter of leverage. We have been exercising our right under NPT. We are a member of NPT, and as long as Iran is a member of NPT, we must be able to use our right of peaceful uses of nuclear energy. So I think that's a matter of a state being a member of an international agreement and being able to benefit its prerogatives. Thank you so much, Ismail Baghai sir, for talking to us. This is Sumaira Khan for TV9 Bharatvarsh from Tehran.